Assalamu alaikum, dear students. I welcome you back with the third chapter of your textbook, which is titled as The Luncheon, written by William Somerset Maugham. But before moving to the lesson, let me introduce you to the three genres. That is, when we talk about a genre means a category of literature. Okay? As you know that there are different categories of literature, as you have read in the previous classes too. You have dealt with prose, okay? You have dealt with some stories, some plays, okay? Now, likewise, today we are going to deal with three genres of literature, and it is going to be short story, novel, play, okay? Now let's first begin with short story. What is a short story? As the name suggests, short story. Short means brief. Short story is brief fictional prose narrative that is shorter than a novel and usually deals with only a few characters. यानी बेटा शॉर्ट स्टोरी जो होती है, it is brief, number one, short, as the name suggests. It is fictional. What is fictional? Imaginative. Are you getting me? It deals with imagination. शॉर्ट स्टोरी जो है ना, रियलिटी के साथ, यानी इसमें हूबहू रियलिटी नहीं दिखाई जा रही. ये स्टोरी बिल्कुल रियल नहीं होती है, बल्कि रियलिटी का अपोजिट है, फिक्शनल होती है, इमेजिनरी होती है. राइटर इसे अपनी इमेजिनेशन से काम लड़ाता है, फिर वो कोई स्टोरी लिखता है. हालांकि अगर वो आप स्टोरी देखेंगे वो कहाँ पे हुई है, तो रियल वर्ल्ड में इसका कोई सोर्स नहीं होगा. मगर पहली बात तो यह है. दूसरी बात जो है, इट्स रिटन इन प्रोज, फिक्शनल प्रोज. हाँ, प्रोज मीन्स जैसे अगर हम न्यूज़पेपर देखेंगे, कोई स्टोरी देखेंगे, ठीक है बेटा, these are usually written in prose, that is opposite of poetry, in sentences, in paragraphs, okay. एंड नरेटिव मीन्स इसमें कोई नरेटर होता है जो हमें कहानी सुनाता है, क्योंकि कहानी में तो नरेटर होना ही चाहिए. दैट इज़ फिक्शनल प्रोज नरेटिव. अब आप कहेंगे सर, इफ़ इट इज़ फिक्शनल, इफ़ इट इज़ इमेजिनरी, व्हाई डू वी रीड अ शॉर्ट स्टोरी? बिकॉज इसका कोई थीम होता है, इसमें कुछ मैसेज होती है रीडर के लिए, ठीक है. अगर ये फिक्शनल वर्क होती है मगर फिर भी ये रियलिटी के साथ डील करती है, इसमें कुछ मैसेज होती है जो हमारी ज़िंदगी में होता रहता है, तो इससे हमें कुछ सीख मिलती है, ओके. एंड दैट इज शॉर्टर देन ए नॉवल. ए शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्टर देन ए नॉवल. तो नॉवल बाद में देखेंगे वो क्या है. यूजुअली डील्स विद ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट स्टोरी देयर आर ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट स्टोरी. कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी शॉर्ट स्टोरी उन्हीं ही कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, ओके. In the higher class you will read about the short story in detail. This is just the definition, the introduction, okay. Then let's move towards the novel. तो novel जो है, it's opposite of short story. Novel is a long work of narrative prose fiction. short story और novel में ये फ़र्क है बेटा. अगर हम शॉर्ट स्टोरी देखेंगे वहाँ भी नरेटर होता है, यहाँ भी नरेटर होता है, वहाँ भी वो भी प्रोज में लिखा जाता है, ये भी प्रोज में लिखा जाता है, वो भी फिक्शन है, ये भी फिक्शन है. पर फ़र्क क्या है? शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट है और नॉवल जो है ये लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग. हाँ, इतनी लॉन्ग विच इज़ टिपिकली पब्लिश्ड एज ए बुक, कि नावल को एक बुक के तौर पर पब्लिश किया जाता है. नहीं, जितनी आपकी ये बुक है, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये बुक है न्यू इमेज क्लास 7, ओके. तो नावल जो है ना इतनी बड़ी होती है, इसे भी मोटी होती है, इसे भी बड़ी होती है, ओके. इट मीन्स दैट इट मे कंटेन मोर कैरेक्टर्स देन ए शॉर्ट स्टोरी, ओके. एंड the third genre is play. What's a play? As I have written it already here, play is a work of drama, usually consisting of dialogues, between characters and intended for theatrical performance rather than just reading. Novel ये जो play जो है, it's a work of drama. Now, as you might have seen a lot of plays, lot of dramas, lot of serials on television, ठीक है, जो आप ड्रामा देखते हैं,
प्ले एक वर्क ऑफ ड्रामा है, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ डायलॉग्स। इसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो रिटन होते हैं, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स। एक बात जो है बेटा, नॉवल और शॉर्ट स्टोरी में डायलॉग्स नहीं होते हैं, मगर प्ले जो होता है डायलॉग फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कैरेक्टर है, वो कोई बात करेगा, फिर बी बात करेगा, फिर कोई सी होगा वो बात करेगा, फिर ए बात करेगा। लाइकवाइज इसमें डायलॉग्स होते हैं, और जो ये डायलॉग्स होते हैं ये रिटन होते हैं। क्या होते हैं? रिटन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको समझाऊंगा बेटा, जैसे आप स्कूल में करते हो ना, कोई प्ले बनाते हो तो कोई किंग बनता है, हाँ, कोई प्रिंस बनता है, कोई क्वीन बनती है, ठीक है, कोई फार्मर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो प्ले में क्या होता है? रोल प्लेइंग। इसमें हम रोल प्ले करते हैं। क्या होते हैं? इसमें हम असाइन करते हैं डिफरेंट रोल्स। प्ले में हम असाइन करते हैं डिफरेंट रोल्स। अब किंग को हम कहते हैं कि आपको ये डायलॉग बोलना है। किंग को क्वीन का डायलॉग नहीं बोलना है, ना ही किंग को फार्मर का डायलॉग बोलना है, ठीक है। किंग को जो हम डायलॉग्स लिख के देंगे, अगर मैं आपसे बताऊंगा कि बेटा हम एक प्ले करेंगे एजुकेशन पे, किसी को मैं टीचर बनाऊंगा, किसी को मैं प्रिंसिपल बनाऊंगा। प्रिंसिपल कैरेक्टर होगा उसको मैं कहूँगा आपको ये डायलॉग्स बोलने हैं। जो टीचर होगा उसके अपने डायलॉग्स होंगे, जो स्टूडेंट होगा उसके अपने डायलॉग्स होंगे, कोई पेरेंट होगा तो पेरेंट के लिए अपने डायलॉग्स होंगे, ठीक है बेटा। तो इन प्ले देयर आर डायलॉग्स बट दीज आर रिटन डायलॉग्स। हाँ, देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स, याद रखिए। देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स who play different roles in the play and they utter the written dialogues, ठीक है बेटा। और जो प्ले में और एक डिफरेंस है, शॉर्ट स्टोरी और नॉवल पढ़ने के लिए होता है, मगर प्ले खाली पढ़ने के लिए नहीं है, इट इज़ मेंट फॉर थिएटर। थिएटर किसे कहते हैं? अगर हम स्टेडियम की बात करें, क्रिकेट स्टेडियम, हाँ, स्टेडियम आपको क्लियर होगा। स्टेडियम की शेप क्या होती है? जहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठते हैं, क्रिकेट का लुत्फ लेते हैं। लाइकवाइज इफ वी गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ प्ले, ठीक है बेटा, थिएटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सर्कुलर भी होते थे, रेक्टेंगुलर भी होते थे। तो वहाँ पे भी ऐसी ही सीट्स लगी होती थी। तो फिर एक स्टेज होता था थिएटर में जो थोड़ा ऊपर होता था, ताकि उसी भी प्ले दिखाया जाए और बाकी जो है स्पेक्टेटर्स वही प्ले अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। नाउ दिस प्ले इज़ मेंट फॉर थिएटर रादर देन जस्ट रीडिंग। लिए खाली पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि थिएटर के लिए मोस्टली बना होता है। आर यू गेटिंग मी? सो दीज आर द main three genres that we have to deal before starting the lesson, the luncheon. Okay, now let's move to the text. यहाँ पे 3 sections है, 3 sections: connect, reflect and imagine. Let's see. In connect section we are told, we are asked something, and what is the question? Name your favorite restaurant. Okay, which is your favorite restaurant? Why do you like it? Why do you? Then you have to give the reason. Okay, then in the reflect section what we need to do is make a list of all the food items you like and those you don't. So you will do one thing. On your rough, on the left side you write food items I like, food items I dislike. Okay, then you have to make the list of both the items you like and of both the items you dislike. Okay, then you have to give some reason. What are the common factors among the dish? Then you need to mention what are the common factors, what is the likeness between two dishes that you like, okay, and the ones that you don't. Then you have to, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे ये डिशेज मुझे पसंद नहीं है बेटा, आपको फिर रीज़न भी देना है वाई डोंट आई लाइक दिस डिशेज। अगर 2 डिशेज यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 डिशेज हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपको बताना है ये दोनों में लाइकनेस क्या है, इनमें सिमिलरिटी क्या है जो मुझे पसंद नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 डिशेज ऐसी हैं जो मैं लाइक करता हूँ, ठीक है बेटा। तो अब इन 2 चीज़ों में, इन 2 डिशेज में कॉमन फैक्टर क्या है कि मुझे दोनों पसंद है। एक ही पसंद क्यों नहीं, दोनों क्यों है। आर गेटिंग मी? तो इन द इमेजिनेशन सेक्शन आपको यहाँ पे कुछ इमेजिन करना होगा, ठीक है। इमेजिन करने से याद आया ना, शॉर्ट स्टोरी से डील हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेजिनेशन से काम चलाना है। यहाँ पे ये हकीकत में नहीं होता है। जैसे more and more people are quitting non-veg around the globe. As you know, non-veg around the globe. As you know that nowadays, now a lot of people are quitting. They are saying they are bidding goodbye to non-veg. Non-veg क्या होता है? वेज मीन्स वेजिटेबल, इससे निकला है वेजिटेरियन। तो नॉन वेज होता है जो गोश्त खाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब गोश्त को छोड़ रहे हैं, दे डोंट ईट मीट। इफ़ द एनिमल्स कुड स्पीक टू यू, अब यहाँ पे इमेजिनेशन है बेटा। इफ़ द एनिमल्स कुड स्पीक टू यू, अगर एनिमल्स आपसे बात करेंगे, व्हाट वुड दे से अबाउट इट? वो इस बात के रिगार्डिंग कि बहुत सारे लोग नॉन वेज छोड़ रहे हैं, वो इसके बारे में आपसे क्या बात करेंगे?
सो इजंट इट ए वर्क ऑफ फिक्शन. अब आपको यहीं पे पता चलेगा व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी. हाँ, इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन. मगर जो आप बेटे डायलॉग लिखेंगे ना, यहाँ पे कोई एनिमल बात करेगा, फॉर एग्जाम्पल टाइगर बात करेगा, डियर बात करेगा, तो इसमें कुछ मैसेज होगी हमारे लिए. मैसेज ये होगी कि हमें गैर ज़रूरी तौर पर एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए. ठीक है. Now before you read, let's see who is this writer, William Somerset Maugham. So इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है. You read it yourself, but I will help mention some important points. The first point is that he was a British short story writer, novelist and playwright. इसलिए मैंने ये mention किया. So as you know that what is a short story, what is a novel and what is a playwright. Okay. So he dealt with all of them. ठीक है. So he was born in France. And he was sent to UK where he attended the King's School, जो कैंटरबरी में है. फिर then he traveled to Germany to study literature and philosophy. Okay. Then he was qualified as a physician, as a doctor at St. Thomas's Hospital. Okay. And another important point is that he started writing when he was just 15 years old. And his dream was to become an author. And his first novel, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा बुक की शेप में आती है, Liza of Lambeth. Liza of Lambeth, it was the bestseller. Okay, it made him very famous. And finally he gave up his medical career. याद रखना बेटा. फिर उसने medical career छोड़ा, then he became a full-time writer. Got it? और वो अपनी राइटिंग के बारे में कहता है क्या, I took it as a duck takes to water. जैसे एक डक पानी के बिना नहीं जी सकता है अच्छे से खुल के. ठीक है. उसे पानी चाहिए ही. Likewise, literature is just this water for him, and he himself compares himself with the duck. Okay. Then he has some famous works of the writer: Human Bondage, The Moon and Sixpence, The Trembling of a Leaf, The Razor's Edge. You need to remember these. You may be asked objective type questions in the examination regarding the same. Okay. Then when you talk about the lesson, the luncheon, it was first published in Nash's magazine in March 1924. Then again it appeared in collected short stories by William Somerset Maugham. Okay, याद रखना बेटा. पहले इसमें appear हुआ, फिर यहाँ पे. This is semi autobiographical. तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा. बस इस टाइम आप यही याद रखेंगे. और ये सेमी ऑटोबायोग्राफी क्या है ये कल बताऊंगा मैं. ठीक है. Now, the author wrote it during the years of his writing when he was not well off. It means that when he was not a good writer, he wrote it about at that very time. It means that when he started writing, he wrote it at the beginning when he was not a famous writer, a well writer. Okay. Then in this lesson, or we can say that in this very lesson, he talks about his struggle with his finance. Okay. It means that he talks about that at the beginning he was financially weak. He was not having that lot of money. Okay. And he talks about financial anxieties, his poverty at the beginning when he was struggling to become a author. Okay. And this lesson is written in a humorous manner. It makes us laugh. Humorous होता है ऐसा जो हमें हंसाए. It makes us laugh. It is meant for entertainment, but it has a message too. Okay. And who is the protagonist, the main character of the story? When we talk about this lesson, we have a humorous protagonist. ठीक है. तो कल ये भी मैं डिस्कस करूँगा what is a protagonist and what is biography and autobiography. Okay. Inshallah we will deal with these 3 points in the next lecture, and inshallah we shall start the lesson in the next lecture. Till then, take care and fi amanillah.